Hello, children. Good morning. Hope you all are fine at home. So, here we have chapter number 12. Our people are strength, grade 4th. So, first of all, you must understand what is the title of the chapter. Half of the chapter will be clear to you. So, our people uh, of any country, people is its strength. जो वहाँ के लोग हैं, they are the strength and power. Strength means power of the state या country or any world. So here we have a short story to understand this chapter. Here, first of all, it's a train journey. Here, if you are watching a picture, some people are sitting here. This story is introducing these people only. Okay, so the Grand Trunk Express was all set to leave from Delhi. So न्यू दिल्ली से आपकी जो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस है ट्रेन है दैट इज़ ऑल सेट टू रन मतलब वहाँ से वो चलने ही वाली है एंड people were gradually settling down trying to adjust their luggage below their berth जो सीट है उनकी बैठने वाली वेयर द पीपल स्लीप उससे नीचे वाली सीट है उस पर वो लगेज अपना एडजस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं देन नेक्स्ट व्हाट हैपन्स रघु वॉज एन आईएएस ऑफिसर वो उस ट्रेन में जा रहा है एंड ही वॉज ट्रैवलिंग विद हिज वाइफ वो अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं आरती who was a teacher in a school and Captain Singh a young army officer who had been posted to South India मतलब वो उनकी साउथ इंडिया की साइड पोस्टिंग हो रही है मे बी केरला एंड मे बी तमिलनाडु ठीक है देन नेक्स्ट they were traveling in the same train and then Neera Tokas was the sarpanch in a village in Haryana and Sahil was a property dealer in Greater Noida that's in Delhi and all of them were traveling in the same कंपार्टमेंट वो ट्रेन में भी सेम है और कंपार्टमेंट भी उनको सेम मिला है दे इंट्रोड्यूस्ड दैम सेल्फ विद ईच अदर एंड बिगेन कन्वर्सिंग विद ईच अदर उन्होंने आपस में बातचीत की एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन किया एंड they had a great conversation that we will study in this chapter and as you know that they are all well educated person we can identify it from their post like someone is army officer someone is teacher someone is uh, sarpanch of the village, IAS officer, property dealer. So they were having a great conversation in this chapter. So let us go through this. So spotlight of this chapter. Spotlight means the main objective and main things that you need to learn in this chapter is the population of India and the population distribution of India. So let us begin with the Captain Singh. I told you who is Captain Singh. So Captain Singh is saying it is so difficult to get train ticket nowadays. My ticket was just confirmed today. So he is saying कि आजकल के टाइम पे टिकट लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्यों है वो आपको बताएगा आगे देन रघु इज़ रिप्लाइंग कैप्टन सिंह वी लिव in the second most populous country in the world so our country is india is the second largest populous country या most populous country in the world with over 1.2 billion people so people I count also they have given now so it is natural that these problems will arise तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होंगी ही क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलस है तो ट्रेन टिकट मिलना आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं द नेक्स्ट आरती सिंह आरती even though we have made tremendous progress in every field like medical sciences, industries, education, and transport, but somehow it is not enough. अब आरती कौन है आरती इज़ अ टीचर आरती इज़ नोइंग दैट देयर इज़ ट्रिमेंडस ग्रोथ तो इंडिया ने ट्रिमेंडस ग्रोथ मतलब लार्ज अमाउंट में ग्रोथ किस में की है लगातार ग्रोथ तो वो की है मेडिकल साइंसेज इंडस्ट्रीज एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट
बट शी इज सेइंग समहाउ इट इज़ नॉट एनफ, ये नहीं एनफ है, क्योंकि अबाउट 40% पीपल जो है वो ही इनमें इंगेज्ड हैं, ठीक है, रेस्ट ऑल अदर आर नॉट in this progress. So next we have the demand is more than the supply, क्योंकि जो डिमांड है वो ज़्यादा है एंड सप्लाई जो है वो कम है. एंड Captain Singh, I believe. Now she is saying to Captain Singh, I believe we have great potential as a nation. अगर हमारे पास हम united हो and we have a great potential, we have a great scope. So India is the young country with almost half of its population below 25 ईयर्स. सो हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो 25 ईयर्स तक या इससे बिलो है, अबाउट 50% ऑफ द पीपल. मतलब यहाँ की 50% जनरेशन जो है दैट आर यंग. एंड दे यंग होने का मतलब है कि दे कैन अर्न मोर, दे कैन हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो हाउएवर, a large percentage of the population in our country is illiterate and uneducated, but half of its population, जो large percentage है वो क्या है, illiterate and uneducated. Illiterate means they who cannot read and write, and uneducated जो पढ़े लिखे but they are not having proper education for their work. Next we have it is difficult to improve their living standard, और उनका living standard improve करना बहुत ही difficult है. This is a major obstacle in the growth of our human resources. और यही हमारी कंट्री की जो मेन ऑब्स्टेकल, मेन जो रुकावट है यही है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाती. तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्स्टेकल? द पीपल, अ लार्ज पीपल आर illiterate and uneducated, and we cannot improve their living standard. The next Sahil saying that the population is indeed growing very rapidly. मतलब कि population जो है वो लगातार बढ़ रही है और rapidly बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से. A number of housing schemes are coming up in the suburb of all metro cities to accommodate the increasing population. So number of housing schemes होती हैं आपकी, लोगों के हाउस बनाए जाते हैं, ठीक है, नियर सबअर्ब. एंड व्हाट इज सबअर्ब? सबअर्ब होता है आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, सिटी के साथ लगते हुए जो एरियाज हैं. देन I belong to the beautiful state of Sikkim, which is the least populated state. Now they are saying you the least populated state is Sikkim in India. ठीक है, this type of question they are discussing in their conversation. So, and you must know which is the highest populated state. highest populated state आपका है उत्तर प्रदेश. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म यूपी. उत्तर प्रदेश इज हाईएस्ट पॉपुलस एंड सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया. नाउ हाउएवर आई वॉन्डर what will happen in the future. वो सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज 382 people per square kilometer. Density means density of population occupies in a 1 kilometer how many peoples are living. ठीक है, how many people are living in a 1 kilometer area, 1 square kilometer area, उसको कहते हैं population density. तो इंडिया की population density है 382 किलोमीटर, 382 people per square kilometer. But it is not same in every state. There are some states like Arunachal Pradesh, there are only 11 people, 11 person per square kilometer are living. तो वहाँ की density है 11 persons. So उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, अब ये सिटीज़ जो जिनकी हाईएस्ट डेंसिटी है वो है उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र.
These are leading in the density of population, and this unequal distribution of population is the main problem in our country. Now, the main problem he is identifying is the unequal distribution of population. What is unequal distribution of population? Question आता है आपको, the number of people are not same, the number of people are not same in every state. That is called unequal distribution of population, and that is the more that is the big problem in our country. India occupies only 2.4% of the area, but it is having over 15% ऑफ इट्स वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. मतलब इंडिया में वर्ल्ड का अगर आप देखो, इंडिया इज़ हैविंग वर्ल्ड्स 2.4% एरिया, लैंड एरिया अगर आप देखते हो तो 2.4% है. एंड इसी 2.4% पे 15% पीपल आर लिविंग ऑफ द वर्ल्ड. तो लैंड कम है एंड पीपल ज़्यादा है. सो दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population with example. Now here you are watching a picture. This is a picture of a village. So now Neera is saying, Neera is the सरपंच ऑफ ए विलेज. सो नीरा कह रही है कि अबाउट 70% ऑफ द पीपल इन अ कंट्री आर लिविंग इन अ विलेज. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर सिंस दे डिपेंड अपॉन द अनरिलायबल मॉनसून एंड the money that they earn by selling their crop is not sufficient to support their families. Hence people move to cities in search of work. So नीरा ने कहा कि 70% पीपल है वो इंडिया में वो विलेजेस में रहते हैं, एंड इसके अलावा कितने बच गए जो आपके अर्बन एरियाज़ में रहेंगे या सिटीज़ में रहेंगे, 30%. ठीक है, 30% आपके सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ उसको कहते हैं अर्बन. ठीक है, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, और जो विलेज में रहते हैं उनको कहते हैं रूरल एरियाज़. ओके, रूरल विलेजेस. सो नीरा इज सेइंग कि अब वो अपनी मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं, अपनी क्रॉप पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फार्मर. और जो वो अपनी क्रॉप सेल करते हैं, सेलिंग क्रॉप से उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता कि वो अपनी फैमिली चला सके अच्छे से. इसलिए लोग जो हैं वो सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं. मीन्स दे मूव टू सिटीज़, दे माइग्रेट टूवर्ड्स सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क. नाउ in my village, she is talking about her village because she is a sarpanch of a village. In my village we have brought about a lot of change उसने लाए हैं. Like she has provided midday meal in the schools. यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये मिड डे मील की है स्कूल में. मिड डे मील का मतलब है द चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गेटिंग देयर फूड ऑफ, दे आर गेटिंग देयर लंच फ्रॉम द स्कूल, उसको कहते हैं मिड डे मील. देन स्कूल्स, बैंक्स एंड हेल्थ सेंटर्स हैव बीन ओपनड. तो उन्होंने अपने विलेज में स्कूल भी ओपन किया है, बैंक भी ओपन किया है, एंड हेल्थ सेंटर्स लाइक डिस्पेंसरीज दे हैड ओपन. देन लैंड एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड. और जिनको ज़रूरत है उनको उन्होंने लैंड भी प्रोवाइड किया एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की है. बट सम हाउ इट ऑलवेज सीम्स लेस. और वो कह रही है कि ये भी बहुत कम है बिकॉज उन्होंने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करी है. सो शी इज़ वर्किंग फॉर दैट. वी आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अब वो बेसिक फैसिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि वो सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें, बेसिक सैनिटेशन लाइक टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें. हायर एजुकेशन मतलब आफ्टर स्कूल कॉलेजेस वगैरह की जो है फैसिलिटी वहाँ पे ओपन करें. देन वी एनकरेज पीपल टू स्टार्ट देयर ओन स्मॉल बिजनेस. हम लोगों को गाइड करते हैं कि वहाँ पे वो अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करें. बिजनेस होता है सेलिंग एंड बाइंग और एक्सचेंजिंग थिंग्स एंड गेटिंग मनी इन रिटर्न. बाय हेल्पिंग देम, बाय प्रोवाइडिंग देम स्मॉल
लोन्स, तो वो लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक के थ्रू उनको, जिससे उनको हेल्प होती है एंड दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। एंड these small loans are also useful in improving their agricultural outputs। एग्रीकल्चर की आउटपुट के लिए जो आपकी प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूव करेगा, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग देम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या गुड वैरायटी सीड्स एंड बेटर इम्प्लीमेंट्स, बेटर मशीनरी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मशीन्स। सो नाउ आरती अगेन सेइंग, आरती इज अ टीचर, सो शी इज़ सेइंग दैट इज़ रियली नाइस नीरा, कि ये बहुत अच्छी बात है, बट आई फील एजुकेटिंग पीपल शुड बी आर मेन एफर्ट। सो शी इज़ सेइंग दैट वी शुड put more emphasis on educating people. If we make village sufficient self sufficient, nobody will migrate to cities. So she is saying if we make the villages self sufficient, मतलब अपने आप में उसको पूरा कर दें कि लोगों को वहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, सो पीपल विल नो टू गो टुवर्ड्स द सिटी। सो दिस माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर शॉर्टेज ऑफ जॉब्स। और क्यों जाते हैं लोग बाहर? बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ जॉब्स टू अर्न, टू इन सर्च ऑफ वर्क। Then basic requirements. Now understand it very carefully. What are the basic requirements for every society? So every society's basic need is food, water, housing, healthcare, like healthcare centers, आपके dispensaries वगैरह हो गए, education में school, colleges, institutions, and jobs. अब वो पढ़ लिख गए तो उनको job भी चाहिए, work भी चाहिए. So every village should be provided with these things, and then we can make a village self sufficient. Basic needs भी यही है, and these things only makes the village self sufficient. So good to know, around third fourth of the population in of India live in villages, rural areas. third fourth का मतलब है 70% people, ठीक है। And under the National Rural Employment Guarantee Act, that is NREGA, each and every rural household can ask for 100 days work from the government. Government से 100 days का work plan every year मनरेगा में आता है, ठीक है। Then Captain Singh, अब जो आर्मी पर्सन है, he is saying our biggest wealth is our biggest wealth and asset are people. asset मतलब valuable thing या important, ठीक है। तो our biggest wealth, जो हमारी सबसे बड़ी wealth है, वो हमारे people हैं। तो people are our strength, wealth, आप कुछ भी लिख सकते हैं। there is a ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन इंडिया, वो बता रहे हैं कि HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट in India, which looks into ways to improve the human resources of the country, जो कि human resource के तरफ ध्यान देता है और देखता है उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। जस्ट इमेजिन इफ़ वी आर एबल टू each Indian and train people in various skills, then by 2020 India will be the global workforce with 110 million young people। तो हमारे पास इतने लोग हैं, अगर सभी के सभी एजुकेटेड होंगे और सभी के सभी किसी ना किसी स्किल्स में, चाहे वो आपकी आर्किटेक्ट स्किल हो, मतलब जो बिल्डिंग बनाते हैं, या फिर कोई भी स्किल हो जो आप स्किल डेवलपमेंट के वर्क में काम करते हो, ठीक है। तो कोई भी स्किल हो, चाहे आपको सिलाई का ही काम आता हो, वो सारे स्किल्स के अंडर आते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें भी हर लोग इम्प्रूव्ड हो, स्किलफुल हो, तो हमारी कंट्री जो है बाय 2020, मतलब 2020 जो ये ईयर चल रहा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है वर्कफोर्स बन जाएगी। वर्कफोर्स मतलब कि पीपल अवेलेबल फॉर द वर्क। तो हर आदमी को कोई ना कोई काम आता होगा, तो वो अपना अर्न भी कर सकता है और कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प भी कर सकता है। देन साहिल, एज अ रिजल्ट India will be a leading nation in all spheres।
सो फिर वो कह रहा है कि हाँ भाई, हो सकता है, और इंडिया विल बी द लीडिंग नेशन इन ऑल स्फेयर्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया है वो लीडिंग नेशन होगा, मतलब एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन होगा जो औरों को भी लीड करेगा। सो जैसे आजकल यूएसए आपका चाइना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब इनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो रही है। So it was almost about 2 p.m. and everyone was feeling hungry. They had a hearty lunch and decided to rest for some time so that they could rearrange themselves for another round of discussion. So this is all about the topic. I hope this is clear to you. Now here we have pick stop. What is being built here? So what is being built here? They are making a building. ठीक है, यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रहे हैं, BUI। सो आपने यहाँ लिखना है, पेपर में आपको आता है बिल्डिंग, BUILDING। दे आर मेकिंग ए बिल्डिंग, दिस इज ऑफ वन। ठीक है, ये वन का आंसर है। देन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर नीडेड फॉर दिस? सो विच टाइप ऑफ पीपल आर नीडेड फॉर दिस? सो हियर वी नीड अ स्किल्ड पर्सन। ठीक है, स्किल्ड पीपल। अनस्किल्ड पीपल या अनएजुकेटेड पर्सन इसको नहीं बना सकता प्रॉपर। मतलब इसका मेज़रमेंट लेना होता है हर चीज़ का, जो आप इसमें यूटिलाइज़ कर रहे हो मटेरियल। ठीक है, तो स्किल्ड पर्सन, और जनरली जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो आर्किटेक्चर होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ यू हैव अ वर्ड पावर। वर्ड पावर आई डिस्कस्ड विद यू। सो बर्थ आपने अंडरस्टैंड करना है। दीज आर द डेफिनेशन दैट एवरी स्टूडेंट हैव टू राइट इन देयर notebooks. Okay, after writing this you will proceed to your book exercise. So question number 1, fill in the blanks. India is the dash most populous country in the world, so it is second most populous. We will write here second, SECOND, second. And the first largest populous country is China. First number China का है population में, first is China and second is India. Then 70% of the world population, 70% of the country's population lives in villages. So हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो ज़्यादातर है वो विलेजेस में रहती है, 70%। पीपल आर कंट्रीज स्ट्रेंथ या वेल्थ आप लिख सकते हो इसको कुछ भी, ठीक है। स्ट्रेंथ STRENGTH, okay, strength. Next we have small loans helps in improving agricultural output. So agricultural output, here you will write agriculture. First of all write the agriculture and AL, E की जगह AL कर देना है, agricultural. Then next, by the year dash, India will have workforce of 110 million. So it is 2020, this year. Okay. Then as next is match the following villages. So best related to village you have to match it. So 70% of the people lives in villages. This will come. High yielding seeds. So high yielding seeds से क्या होता है कि good agricultural output. Okay. Then next 382 या 28 people square kilometer, जो ये है आपकी डेंसिटी है कंट्री की। below 25 years are the 50% of the population of India. And farmers depends on the unreliable monsoon, right? Next we have true false. India has the highest population in the world. No, India do not have the highest population. It is having second highest population in the world. So it is false. Here you have to correct it. Either you can write it China has the highest population in the world, or you can do it by this way. India has the second highest population in the world. Or two ways you can solve this statement. Next, the state of Goa has the largest population in the country. So no, it's not Goa, it is false. It is Uttar Pradesh. Okay, Uttar Pradesh. UTTAR Pradesh, PRADESH. Then next we have third,
The density of the population of India is approximately 300, 425 kilometer per square. So this is wrong. 328 square person per kilometer. Then around 30% of the people lives in villages. No, around 70% of the people lives in villages. Or you can write around 30% of the people lives in urban areas. In two ways you can solve it. Now, every village in India has proper sanitation facilities. So, no, it is false because Neera was saying we are trying to provide villages a sanitation facility. So, it is false. Okay. Now, question and answer we have. I will just discuss it with you. What is the unequal distribution of population? So the number of persons, a number of people are not same in every state. It is called unequal distribution of population. Then next we have name three states, yeah, three areas which you think India has made progress. So India has made progress in education, technology and medical sciences. Then next we have what are the basic requirements for the people of every society. So this is food, water, shelter, jobs and education. These all Neera has discussed, sorry, Aarti has discussed this, so you can check it on Aarti's part. Now, what is the main reason behind migration from the village? So मेन रीज़न जो है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी एंड वर्क फोर्स. वर्क के लिए लोग जनरली विलेज से सिटीज़ की तरफ जाते हैं. ठीक है, मेन इज़ वर्क, in search of work. Now next we have how can migration be prevented? Migration be prevented by making a village self sufficient, and job opportunity, education facility, healthcare center should be open in villages. So these things you have to mention in it. And last question is the think and answer. How can village become self sufficient? So village can become self sufficient by providing all the basic facilities in the villages that you have to write: food, water, shelter and education, job facilities, banking facilities. These all are necessary things that can make a village self sufficient. So thank you very much. Watch it again and again if you are not understanding, and you can either WhatsApp me. Thank you, and watch it again.